Good evening, everyone. Hello and welcome to the YouTube channel of PRATHAM Test Prep. I am Ankit Singh and I welcome you on the YouTube session of this live session of current affairs with me, Ankit Singh. I hope you all are doing fine. So today we are going to discuss about the current affairs from last 3 days, that is starting from 28th of March to 31st of March. So guys, as you all know that current affairs plays an important role in each and every exam. So if you are preparing for any of the exam related to IPM-IIM, GMAT, which is now CUCET, so these current affairs will play an important role for you all. So before starting, I hope you join guys, sub join kar lijiye please. Hello everyone. Ishan Sharma, hello. Ananta, hi. So today we are going to discuss about the current affairs of 28th, 29th and 31st of March. For last 3 days we are going to cover. And on every Monday, Wednesday and Friday, we do these current affairs session on our YouTube channel, that is PRATHAM Test Prep. Right? So let's get started. So guys, let's get started for today's session. And the first important news for the day is International Transgender Day of Visibility is celebrated on 31st of March. As you all know, कि transgender जब हम word सुनते हैं, when we listen to this word, International Transgender Day of Visibility, तो आपके दिमाग में क्या आता है कि what this day is all about, है ना? तो एक बार हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं and then let's see कि ये International Day of Transgender Visibility है क्या? Okay. So जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं, एज यू ऑल नो दैट ट्रांसजेंडर के बारे में आप सबने सुना होगा, तो इनके जो वर्ल्ड वाइड जो इनकी इंपॉर्टेंस है वो हमें पता नहीं है ना. डिस्क्रिमिनेशन होता है इनके साथ, जो डिस्क्रिमिनेशन हम डेली सुन रहे होते हैं. सो the important thing is the International Transgender Day of Visibility, that is TDOV, is observed annually on 31st March. Right, 31st March ko we celebrate this day. So what we do on this day is we raise awareness of what? कि we should not do any discrimination related to these transgender people worldwide, right? इनके साथ कोई भी भेदभाव हमें नहीं करना है. और along with this, what we do, we also celebrate their contribution toward the society. Society में जितना भी इनका contribution होता है, right? ये भी कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं. आपने बहुत सारी न्यूज में देखा होगा. So and आजकल जेंडर न्यूट्रलिटी के लिए भी बहुत सारी चीजें हो रही हैं. So this day is mainly celebrated for that only. ओके, वन थिंग इज ट्रांसजेंडर न्यूट्रलिटी में होता क्या है. फर्स्ट थिंग इज, सबसे पहले तो हम अवेयरनेस रेज करते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, है ना, रिलेटेड टू ट्रांसजेंडर पीपल. ओके, अलोंग विद दिस वी सेलिब्रेट देयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द सोसाइटी. Okay, sir, I started from today. Will I be able to crack exam? Definitely, Andita. No need to worry about that. If you are with us, and definitely for current affairs, you will easily able to do all the questions related to the current affairs. But religiously, you have to follow certain things that we will be discussing in our YouTube sessions as well as in our classes. Okay. So now, if we talk about this day, the day was founded. Actually, this जो day था, ये किसने found किया था? Rachel Crandall of Michigan, है ना? मिशिगन के एक है रेचल क्रैंडल, वो ये डे सेलिब्रेट करते हैं. यूएस बेस्ड ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट हैं. ये कौन से एक्टिविस्ट है और कहां से बिलोंग करते हैं? यूएस बेस्ड एक्टिविस्ट हैं, है ना. इन्होंने द फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर जो डे था वो स्टार्ट हुआ था 2009 में. सो इन 2009 द फर्स्ट डे ऑफ ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी वाज सेलिब्रेटेड, राइट. अगर अब हम की बात करते हैं, सिंस 2009 द डे हैज बीन led by the US based youth advocacy organization. So जो ये important चीज है, इससे US based youth advocacy organization, Trans Student Educational Resource. This is the organization which have advocated and led this program. So since 2009 we are celebrating this day. I hope this is clear to every one of you. So एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं before moving to the next news. आपको important क्या 3 चीजें याद रखनी है. 31st March is celebrated as International Transgender Day, right? Why we celebrate this day? Because to raise the awareness related to the discrimination agar transgender community, and second, the contribution of their contribution towards the society. Third thing is, this day has been celebrated since 2009. I hope this is clear. We can move to the next slide now, right? Let's guys so move to the next slide. Assam and Meghalaya signed historic agreement to settle 50 years old border dispute. Now, the second important news for the day is, like, as you all have heard about this thing, that Assam and Meghalaya, right? जब से असम का फाउंडेशन हुआ है, right? And Assam Regulation Act is 1971, जब बहुत सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स वर कार्व्ड आउट फ्रॉम असम. सो क्या हुआ है कि 50 इयर्स का एक डिस्प्यूट चल रहा है, राइट?
border dispute related to the boundaries. जो 2 states हैं उनकी boundaries को लेकर dispute चल रहा है, that is Assam and Meghalaya. I hope you are aware about the northeastern states of our country. आपको पता होना चाहिए है ना, नॉर्थ ईस्ट के बारे में भी आपको पता होना चाहिए. So why this is important? Because कुछ दिन पहले आपने violence के बारे में सुना होगा on the border of Assam and Meghalaya. So same is the thing and we are going to discuss this. This is very important related to your exam point of view. क्यों? क्योंकि इससे related question आ सकता है. So first thing is Assam and Meghalaya ने एक historic agreement sign किया है, right? What that they are going to resolve the 50-year-old pending boundary differences. उनके बीच में जो boundary differences थे, right? Border dispute जो था, boundary dispute जो था Assam and Meghalaya के बीच में, they are going to resolve this. And how many years have this taken? Around 50 years, right? 50 साल में पहली बार they are going to solve this border dispute. So ये जो agreement sign हुआ, ये कहाँ sign हुआ? In the presence of Union Home Minister Amit Shah at the office of the Ministry of Home Affairs. Ministry of Home Affairs का जो हमारा ऑफिस है न्यू दिल्ली में, वहाँ पे in the presence of our Home Minister that is Amit Shah, ये decide हुआ है कि they are going to resolve the Assam and Meghalaya border dispute. Now coming to the second important point, Assam Chief Minister Hemant Biswa Sharma and his Meghalaya counterpart CK Sangma, they have signed an agreement, right? And in the presence of chief secretaries of both the states. So क्या होता है, जब chief ministers होते हैं तो उनके साथ chief secretaries भी obviously बात है वो सब होते हैं, as well as other officials of the MHA, Ministry of Home Affairs के other officials होते हैं. वहाँ पे उन्होंने ये decide किया कि they are going to resolve this long pending border dispute, right? Now what they are going to do is, as let me tell you one thing, that from 1972, right, this border dispute is going on. एक्चुअल में हुआ क्या था ना, इन 1971 और 72 असम रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना था, राइट? इन 1971 एंड 72 असम रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट. सो ड्यू टू दैट इन असम रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट द मेघालय हैज बीन कार्व्ड आउट फ्रॉम असम. और उस टाइम पे क्या हुआ था, कुछ बॉर्डर की जो डिक्रिमिनेशन हुई थी, बॉर्डर लाइन का जो कुछ बंटवारा उनके बीच में जो हो रहा था, उसके अंदर एक डिस्प्यूट आ गया था विच इज पेंडिंग फ्रॉम लास्ट 50 years. बट फाइनली एंड वी आर होपिंग दैट कि अब वो चीजों को सोल्व कर रहे होंगे. Right, let's move to the third important point. The government of Assam and Meghalaya had come up with a draft resolution. So resolution बनाया to resolve this border dispute in 6 of the 12 areas. So there are total 12 disputes, right? उसमें से 6 के ऊपर उनका agreement हो चुका है, एक agreement उन्होंने sign किया है कि वो उसको solve करेंगे along the 884 kilometer boundary. So कितनी boundary है? 884 kilometer, right? According to the proposed recommendation for the 36.79 square kilometer of area, Assam and Meghalaya. So इसमें से important क्या क्या चीजें हैं? Important ये हैं, 2 states हैं. कौन कौन से states हैं? Assam and Meghalaya. They are having a border dispute from last 50 years. So who is the current chief minister of Assam and Meghalaya? You have to keep this thing in mind. एंड हुआ क्या है कि इन दोनों ने इन द प्रेजेंस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, राइट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में हमारे जो मिनिस्टर हैं होम अफेयर्स के, वो कौन है? श्री अमित शाह जी हैं. अमित शाह की प्रेजेंस में एक उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया कि दैट दे आर गोइंग टू साइन द एग्रीमेंट, and in which agreement they have stated that they will going to resolve the 6 disputes out of total out of 12 disputes, right? So this is the thing related to this. Let's move to the next slide. So for today we are going to discuss about the third important news, that is I&B Ministry, Information and Broadcasting Ministry announced the merger of all film bodies under National Film Development Corporation, right? NDFC का formation हो रहा है, right? So I&B मिनिस्ट्री ने क्या अनाउंस किया कि मर्जर ऑफ ऑल फिल्म बॉडीज, जितनी भी फिल्म बॉडीज हैं उन सबका एक्विजिशन हो जाएगा, मर्जर हो जाएगा किसके साथ? एनडीएफसी के साथ. एंड व्हाट इज एनडीएफसी? नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, राइट? सो दिस इज द थर्ड इंपॉर्टेंट न्यूज फ्रॉम द डे. ओके, लेट्स डिस्कस. Sir, please explain again. I didn't understand. Anita, which point you want to know? I&B Ministry. I am discussing about that only, right? I&B Ministry में हुआ क्या है? Merger of all film bodies under National Film Development Corporation. So जितने भी हमारी ये bodies हैं जो film making को लेके काम करते हैं. Last point you want to ask? Second slide. Definitely. I will. Okay. So let me tell you. Anindita is saying Assam and Meghalaya, right? So, Anandita, what is this? Like there are 2 states, Assam and Meghalaya. They have signed an historic agreement to settle 50-year-old border dispute. There is a border dispute going on between Assam and Meghalaya. There are 2 states. Assam, one is Assam, another is Meghalaya. तो इन दोनों के बीच में एक border dispute है. क्यों dispute है? कि जब 1971 में like states जब अलग हो रहे थे तो मेघालय को असम से अलग किया गया, right? Meghalaya is taken out from Assam और मेघालय का foundation होता है. जब मेघालय का birth हो रहा होता है, या जब मेघालय एक another
स्टेट बनाया जा रहा होता है, उस टाइम पे कुछ चीजों के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स थे, इश्यूज थे, which has been pending since last 50 years. तो उन सब चीजों को लेके why this is in news? Because कुछ दिन पहले क्या हुआ था, असम एंड मेघालय बॉर्डर के ऊपर there is a violence between the police forces of Assam and Meghalaya as well as local peoples of both the states. So उस चीज को देखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स has decided कि हम बीच में बीच बचाव करते हैं और इनके कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व कराने में मदद कर रहे होंगे, राइट. सो अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हमारे जो अमित शाह जी हैं, मिनिस्टर हैं जो होम अफेयर्स के, उन्होंने दोनों चीफ मिनिस्टर्स को, दैट इज हेमंत बिस्वा शर्मा फ्रॉम असम एंड संगमा जी फ्रॉम मेघालय, उन दोनों को बुलाया एंड दे हैव एग्रीड टू साइन एन एग्रीमेंट दैट दे आर गोइंग टू रिजोल्व द 6 कॉन्फ्लिक्ट्स आउट ऑफ 12, और जो बाकी 6 हैं उनको वो आगे कर रहे होंगे डिस्कस, राइट. आई होप दिस इज क्लियर टू यू नाउ. सो दिस इज द थिंग. Let's move to the next. Okay. So I&B Ministry has announced merger of all film bodies under National Film Development Corporation. Right. So jitni bhi the Union Ministry of okay, first thing that you have to keep in mind. Okay, ma'am, Bhuvan aaj ma'am thoda sa busy hai, so next time ma'am will be with you. So don't worry about that. I&B Ministry has announced merger of all film bodies under National Film Development Corporation. So जो I&B Ministry है, Union Ministry of Information and Broadcasting, इन्होंने क्या डिसाइड किया है, इन्होंने एक ऑर्डर इशू किया है दैट मर्जर प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्रीज, जितनी भी डॉक्यूमेंट्रीज जो हो रही होती हैं, बन रही होती हैं, शॉर्ट फिल्म्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फिल्म्स टू बी नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, APSU, वर्किंग अंडर द मिनिस्ट्री, राइट. जो जितनी भी ये चीजें अभी आई हैव सेड और आई हैव मेंशन इन द पॉइंट विल बी कमिंग अंडर द NFDC. What is NFDC? That is National Film Development Corporation, right. Coming to the second point, bringing all these activities under a single management. इससे होगा क्या ना, ओवरलैप ऑफ वेरियस एक्टिविटीज, अलग अलग कुछ चीजें हो रही होती हैं, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक रिसोर्सेज, ये सब इनके मर्जर से हो रहा होगा, राइट. बिकॉज कुछ चीजें सेपरेट हो रही हैं और कुछ किसी अंडर मिनिस्ट्री के आके हो रही हो, सो दैट गिव्स एन लाइक स्मूथ फ्लो टू द ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू दिस डॉक्यूमेंट्रीज, शॉर्ट फिल्म्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स एंड सो ऑन. सो right, coming to the third point, the mandate of production of documentaries that was earlier done by the film division, right. जो mandate होता था documentaries बनाने का, short film बनाने का, वो किसके पास होता था, film division के पास होता था, but now it has been transferred to NFDC with effect from April 2022. So this is important, you have to keep this thing in mind that NFDC started working from when? NFDC started working from April 2022, right. And National Film Development Corporation के CEO कौन है? रविंदर भाकर, right. You have to keep this thing in mind also. Who is the CEO of National Film Development Corporation? That is Ravinder Bhakar. I hope this news is clear to you, so we can move to the next important news for the day, right. Can we move to the next, guys? I hope आपने जो important points थे इससे related वो note down कर लिए होंगे and we can move to the next now. Okay. This is also one of the important news, that is first wildlife bond issued by World Bank, right, to save Africa's black rhino. You all are aware about the black rhinos of Africa, right. So first wildlife bond has been issued by World Bank. World Bank ने एक first wildlife bond issue किया है. So ये issue क्यों किया है? To save the rhino, as you all know कि अफ्रीका के जो black rhinos हैं उनको save करने के लिए किया है, और उसके साथ साथ कुछ other conditions भी हैं. So we will be discussing about all these things in this news. The first thing is World Bank, as you all know, as you all are aware about the World Bank, that is World Bank an important organization, right, throughout the world, and loans and fundings and सारी चीजें करता रहता है. World Bank has priced the world's first wildlife bond. उन्होंने world's first wildlife bond issue किया है, right, raising $150 million that will be partially used for the conservation of black rhinos in Africa, right. Black rhinos को बचाने के लिए ये फंड उन्होंने दिया है, and how much is the amount? That is $150 million, right. This has been used by World Bank for the conservation of black rhinos in South Africa. Okay. And why this has been done? As you know that these are the endangered kind of species, black rhinos, है ना, बहुत सारी चीजें हैं. इंडिया में भी हम सेव द टाइगर करके एक प्रोजेक्ट चलाते हैं और बहुत सारी चीजें वाइल्ड लाइफ को लेके हो रही होती हैं, right. Second, so this bond has been signed for 5 years. Second point is 5-year bond will be pay returns determined by the rate of growth in population. Now जो इसके returns होंगे वो कैसे determined होंगे? जिस bond के जो returns होंगे वो कैसे determined होंगे? On the rate of growth in the population. जो rhino है, black rhino है, उनकी जो rate of growth होगी in 5 years, they will be observing for 5 years, and depending upon that, the returns of this bond has been decided, right. और ये हो कहाँ रहे होंगे? Where they are been observing?
they have been observing the things in Ado Elephant National Park and the Great Fish River Nature Reserve. These are the two national parks. One is Ado Elephant National Park and the Great Fish River Nature Reserve. यहाँ पे ये कुछ ऑब्जर्व कर रहे होंगे चीजों को, एंड what are the things they are going to observe? They are going to observe about the rate of growth in population of black rhino, right? Black rhino की जो population है उसकी जो growth है उसको ये observe कर रहे होंगे, and based upon that the 5-year bond will be returns will be decided upon that. Now the third thing is the important thing is the wildlife conservation bond is a first of its kind outcome based financial instrument, right? तो इसके बेसिस पे आउटकम बेस्ड है ये, जितना इसका बेटर आउटकम होगा उसके इतने बेटर रिटर्न्स हो रहे होंगे, एंड दिस इज द फर्स्ट ऑफ काइंड जो वर्ल्ड बैंक ने इशू किया है, फर्स्ट वाइल्ड लाइफ बॉन्ड एवर टू सेव टू कंजर्व द ब्लैक राइनोज ऑफ अफ्रीका, राइट? नाउ इफ दिस प्रोग्राम हैज बीन सक्सेसफुल, अगर ये कामयाब होता है, सक्सेसफुल होता है, सो दिस कैन बी एक्सपेंडेड टू प्रोटेक्ट ब्लैक राइनो पॉपुलेशन इन कीनिया आल्सो, एज वेल एज अदर वाइल्ड लाइफ स्पीसीज सच एज लायंस, टाइगर्स, गोरिल्लास एक्सेट्रा, राइट? जो ऐसी चीजें हैं उनको बचाने के लिए जो एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं उनके लिए भी इस काइंड के बॉन्ड्स आगे फर्दर इश्यू हो सकते हैं, बट डिपेंडिंग अपॉन द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ दिस प्रोग्राम, राइट? नाउ हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक? Who is the president of World Bank? This is important. World Bank group का कौन president है? That is David Malpass. I hope आपने ये सब राइट डाउन कर लिया होगा, है ना? एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ इस न्यूज में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें थी. द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इज दैट फर्स्ट वाइल्ड लाइफ बॉन्ड हैज बीन इशूड. किसने इशू किया? वर्ल्ड बैंक ने इशू किया. क्यों इशू किया? टू कंजर्व द ब्लैक राइनोज ऑफ साउथ अफ्रीका, राइट? इनकी कंजर्वेशन से क्या होगा? बॉन्ड के रिटर्न्स डिसाइड होंगे. कहां पे ये जो रेट ऑफ ग्रोथ जो पॉपुलेशन है राइनोस की वो कहां देखी जा रही होगी? इन टू नेशनल पार्क्स. वन इज एडो एलिफेंट नेशनल पार्क, अनदर इज ग्रेट फिश रिवर नेचर रिजर्व, राइट? एंड इफ द प्रोग्राम इज सक्सेसफुल, अगर वर्ल्ड बैंक को लगता है कि ये अच्छा प्रोग्राम रहा, सक्सेसफुल रहा, तो ब्लैक राइनो की पॉपुलेशन को अलग अलग कंट्रीज में कंट्रोल करने के लिए, कंजर्व करने के लिए, और वाइल्ड लाइफ स्पीसीज सच एज लायन, टाइगर्स, गोरिल्लास, इनको भी सेव करने के लिए इस काइंड के बॉन्ड्स फर्दर इशू किए जाएंगे वर्ल्ड बैंक के द्वारा, राइट? एंड हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप? दैट इज डेविड मालपास. आई होप दिस इज क्रिस्टल क्लियर टू यू now, and we can move to the next slide, right? Can we move to the next slide, guys? Okay. This is also important, as you have all seen this in the news, that Bangladesh Dhaka ranked world's most noise polluted city, right? Bangladesh Dhaka. So as you all know that what is the capital of Bangladesh? Bangladesh की capital है, that is Dhaka. इसकी रैंक क्या है? वर्ल्ड्स मोस्ट नॉइज पोल्यूशन. फर्स्ट रैंक इन्होंने ली है किस चीज में? नॉइज पोल्यूशन में, राइट? इफ यू टॉक अबाउट द सेकंड थिंग, तो सेकंड नॉइज पोल्यूटेड सिटी कौन सी है? सेकंड नॉइज पोल्यूटेड सिटी कौन सी है? दैट कम्स फ्रॉम इंडिया, राइट? है ना? हमें पता होना चाहिए कि सेकंड मोस्ट पोल्यूटेड सिटी कौन सी है ना? मुरादाबाद, राइट? सो सेकंड इज मुरादाबाद. उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद जो है दैट इज सेकंड, एंड वर्ल्ड की फर्स्ट कौन है? ढाका, right? Now let's discuss about this news in great detail, so that इससे related कोई भी अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको कहीं भी देखने को मिलता है, so that you can easily able to solve that. Now the first thing is United Nations Environment Program, that is UNEP, report titled Frontiers 2022 Noise, Blaze and Mismatches. Okay, so Anandita, I am telling you who decides. So UNEP is a body, right? United Nations Environment Program की like do they come and check? Yes, kind of research they do, right? है ना? कुछ surveys वो कर रहे होते हैं, and on the basis of that they decide. So the first thing is United Nations Environment Program UNEP report है, that is Frontiers 2022 Noise, Blazes and Mismatches. Measured noise levels in 61 cities of the world. So इन्होंने क्या किया? 61 cities of the world में किसने किया? UNEP की एक रिपोर्ट है जिसका नाम है Frontiers 2022 Noise, Blazes and Mismatches. इन्होंने measured noise levels in 61 cities of the world. And why is it always Asia? New York is more noise than us, I guess. Okay, so क्या होता है ना निदिता, देयर आर डिफरेंट रीजंस, डिफरेंट क्राइटेरियाज, अलग अलग चीजें होती है जिसके ऊपर ये मेजर कर रहे होते हैं. सो अकॉर्डिंग टू देयर रिपोर्ट, इन्होंने जो रिपोर्ट दी है दैट इज द फाइंडिंग्स ऑफ देयर रिपोर्ट दैट वी आर डिस्कसिंग इन दिस न्यूज. ओके, सो 61 cities they have done this research and taken the sample and done the entire survey. So they have found that कि बांग्लादेश की जो कैपिटल है that is Dhaka topped the list with a noise level of 119 decibels. As you all are aware that decibels is the standard unit to measure the sound, right? When it comes to the second position, then Uttar Pradesh, Muradabad second,
Muradabad is in Uttar Pradesh and it is at the second in list. And Pakistan's capital Islamabad is ranked third. So आपको अभी तक important चीजें इसमें से क्या decide हुई अभी तक इस news को जब हम देख रहे हैं तो what is the important in this? बांग्लादेश की ढाका जो capital है that is the most noise polluted city in entire world. Who decide this? United Nations Environment Program की एक report है, right? How many cities they have surveyed or researched, measured the noise levels of 61 cities of the world. And out of those 61 cities, Dhaka is at the first position. Muradabad from Uttar Pradesh is the second city, and Islamabad from Pakistan is at third. Now, quietest cities, according to this report, अब ये तो सबसे ज्यादा noise polluted city थी. Which is the quietest cities in the world as per the report? Ireland at 60 dB, Lyon at 69 decibels, Madrid at 69 decibels, Stockholm at 70 decibels, and Belgrade at 70 decibels. So these are some of the cities which are quietest, जहाँ पे noise pollution बहुत ज्यादा ही कम है. Because you can compare, one is at 119 decibels, whereas another is at 60 decibels, right? So you can see the difference yourself. Now, coming to the fourth point, if we talk about the other four most noise polluted cities in India other than Muradabad, then how many four cities are? One is Kolkata. कौन-कौन सी है वो? Kolkata. Asansol is also from West Bengal. Jaipur and Delhi, right? And who is the executive director of UNEP? UNEP is United Nations Environment Program. That is Inger Anderson, right? Anderson is the UNEP's executive director. So this is important. आप note down कर लीजिए इसे because किसी भी एग्जाम में आपको देखने को क्वेश्चन मिल सकता है. It's most polluted out of Asia, right? No. It's world's most noise polluted cities. It's from entire world, right? Because we have mentioned that they have measured the noise levels in 61 cities of the world. So एक बार मैं आपको revise करा देता हूँ. What are the important things from this? What are the important takeaways from this news? So first thing is Bangladesh, Dhaka ranked world's most polluted city. Who done this entire research work? UNEP, United Nations Environment Program, right? उनकी एक Frontiers 2022 noise blaze and mismatches करके they have measured 61 cities of the world. Out of those 61 cities, उनमें से first position किसको मिली है noise polluted में? That is Bangladesh, Dhaka, capital of Bangladesh. Second is Muradabad from Uttar Pradesh, and third is Islamabad from Pakistan. Right. When it comes to the other cities of India, then the number is Kolkata, Asansol, Jaipur, and Delhi. Right. If we talk about the quietest cities, कि सबसे कम noise pollution कहाँ हो रहा होता है? तो Lyon, Madrid, Stockholm, these are the cities जहाँ पे सबसे कम हमारा noise pollution हो रहा होता है. Last and important point from this news is UNEP executive director कौन है? That is Anderson. I hope this is clear. सबको clear हो गया होगा, and we can move to the next. Wait, please. I'm noting. Definitely, Anandita, you can note down, right? है ना? So you can watch this recording also, और ये आप note down कर सकते हैं. First is Bangladesh Dhaka. Second is Muradabad from UP. Third is that is Pakistan's Islamabad. मैं आपको इतनी बार रिवाइज करवा दूंगा ना क्लास में कि जब भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो definitely you will be easily able to mark the correct options. Okay, guys. Okay, done. Final. So let's move to the next news of the day. Now, one important news is आप सबने देखा होगा न्यूज में अभी विराट कोहली टॉप सेलिब्रिटी ब्रांड रैंकिंग फॉर 5th स्ट्रेट ईयर, है ना? विराट कोहली, वन ऑफ द लाइक फॉर्मर स्कीपर ऑफ इंडिया, टॉप सेलिब्रिटी ब्रांड रैंकिंग्स फॉर द 5th स्ट्रेट ईयर, राइट? एक सेलिब्रिटी ब्रांड रैंकिंग निकलती है, एज यू ऑल आर अवेयर अबाउट दैट, सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2021. दिस इज द 7th एडिशन ऑफ दिस रिपोर्ट. टाइटल्ड, इसका टाइटल क्या है? डिजिटल एक्सेलरेशन 2.0, रिलीज्ड बाय डफ एंड फेल्प्स. डफ एंड फेल्प्स का नाम था, बट नाउ इट्स स्क्रॉल, राइट? Cricketer Virat Kohli was ranked as the most valuable celebrity for the 5th consecutive time in 2021. लगातार 5 बार से विराट कोहली is on the top of this list. If we talk about other celebrities, including some famous cricketers as well as some Bollywood stars, so who are they? वो अलग-अलग कौन लोग हैं? तो उनके बारे में भी हम डिस्कस कर रहे होंगे. So apart from विराट कोहली, रणवीर सिंह bettered his brand equity, है ना? रणवीर सिंह बॉलीवुड से आते हैं, आप सब अवेयर होंगे इसके बारे में. इन्होंने अपनी ब्रांड इक्विटी को इंप्रूव किया है एंड क्लाइम्ड a spot higher to the second spot. So second पे कौन आ गए हैं with a brand value of 158.3 million US $? रणवीर सिंह आ गए हैं सेकंड पोजीशन पे. अक्षय कुमार स्लिप टू नंबर 3. जो अक्षय कुमार हैं हमारे बॉलीवुड एक्टर हैं, दैट नंबर 3 पे आ चुके हैं विद a brand value of 139.6 million US $. Apart from that, fourth position पे you all will be surprised to know that movie star आलिया भट्ट, the youngest celebrity in the top 10, है ना? आलिया भट्ट जी सबसे youngest हैं जो at the 4th position पे आ गए हैं in celebrity brand rankings,
right? With the most value brand, $68.1 million US. Now, if we talk about the total brand value of the top 20 celebrities in India, अगर हम इनकी total brand value की बात करते हैं, who all are at 20 celebrities, that stands at $1.2 billion US in 2021, which represents a growth of about 12.9% as compared to the previous year, right? Now, what are the important takeaways from this news? इसमें से important क्या है कि Celebrity Brand Valuation Report 2021 release हुई. This is the 7th edition, है ना? And what is the title of this report? Digital Acceleration 2.A. And who released this? Kroll, or you can say Duff and Flaps, which is now Kroll. So cricketer Virat Kohli again from last 5 years has most valued celebrity. Who is at the second position? Ranveer Singh is at the second position. Who is at this third position? Akshay Kumar is at third position. And at fourth position is Alia Bhatt, which is also the youngest celebrity in the top 10 and now the most valuable brand. Right? I hope this is clear to everyone. ये आप सबको clear हो गया होगा. इसमें आपको सिर्फ 3 या 4 चीजें important याद रखनी है. First position पे विराट कोहली है. किस चीज में first position पे है? Top celebrity brand rankings में. Right? Second पे हमारे रणवीर सिंह है. Third is Akshay Kumar and fourth is Alia Bhatt. Okay, so इसके जो top 10 है उनको एक बार list को हम देख लेते हैं so that you can go through this list. Right. So list of the top 10 most valuable celebrities कौन-कौन है? First is at Virat Kohli, as I have just mentioned and we have discussed about Virat Kohli. Second is Ranveer Singh. Third is Akshay Kumar. Fourth is Alia Bhatt, which is also the youngest among these all. Then MS Dhoni. Right. फिर अमिताभ बच्चन जी आते हैं, दीपिका पादुकोण, सलमान खान, आयुष्मान खुराना and ऋतिक रोशन. आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. You can see this list and then along with their brand values, right? आप brand values भी इसकी देख सकते हैं. Then we will be moving to the next slide and the next important news from the day. So important takeaways are: who is at the first? Virat Kohli. Second, Ranveer Singh. Third, Akshay Kumar. And youngest at the fourth position is Alia Bhatt. Okay, if this is done, we can move to the next slide. I hope this is clear to you. And now we are moving to the next important news from the day. 94th Academy Awards announced. Okay, Academy Awards or the Oscars, right? One and the same thing. So Academy Awards or the Oscars are regarded as the most prestigious awards when it comes to the entertainment industry. So ये सबसे most important awards होते हैं. इनको अभी announce किया गया है, right? Oscar 2022 or the 94th Academy Awards, right? So this is the 94th edition and was held in Dolby Theatre in Los Angeles. कहाँ पे हुआ ये? Dolby Theatre in Los Angeles. So this is important. हुआ कहाँ पे conduct? Dolby Theatre, Los Angeles. Deaf Family Drama Coda winning Best Picture honors, handling Hollywood's top award to a streaming service for the first time. Right. Will Smith wins Best Actor for King Richard. Will Smith जो थे इन्हें Best Actor का award मिला है, right? Jessica Chastain win Best Actress award for The Eyes of Tammy Faye, right? इनको Best Actress के लिए चुना गया है. Jane Champion with Best Director Trophy for The Power of the Dog. Power of the Dog के लिए इन्हें Best Director की trophy मिली है. And Billie Eilish and O'Connell won Best Song for No Time to Die. This is their first Oscar, right? No Time to Die में जो Best Song है, this is the first Oscar for them. The host for this ceremony were, who were the host? Host कौन थी इसमें? Amy Schumer, Regina Hall and Wanda Sykes. Right? These are the hosts. For the first time since the 83rd Academy Awards held in 2011, the multiple hosts were featured in this Academy Awards. Right. So what are the important takeaway from this news? इसमें से important चीजें क्या-क्या हैं जो आपको रखनी है, याद रखनी है, so that you can able to solve the MCQs when you face any of your interview or when you go to any of the entrance exams. Okay, 94th Academy Awards or the Oscars, right? 2020 Oscars has been held where? In the Los Angeles, Dolby Theatre, Los Angeles. Okay, so who is the best actor in Oscars? That is Will Smith. Best actress, Jessica Chastain. Jane Champion wins Best Director Trophy for The Power of the Dog, right? And the best film is also The Power of the Dog. For Best Song, Billie Eilish and O'Connell, No Time to Die. The movie is No Time to Die, and they have been given this for the first time. They have won their first Oscar. Who are the hosts? There are 3 hosts: Amy Schumer, Regina Hall, and Wanda Sykes. And after 2011, this is the first time that multiple hosts have been featured during the ceremonies. Right? I hope this is clear. सबको clear हो गया होगा. आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. These are the important things जो आपको एक बार रिवाइज करनी है. जब आप रिवाइज कर लेंगे तो आपको ये याद रहेंगी और याद रहने के साथ साथ आप कोई भी क्वेश्चन इजीली सोल्व कर सकते हैं रिलेटेड टू द एकेडमी अवार्ड्स और ऑस्कर्स अवार्ड्स. एज यू ऑल आर अवेयर, ऑस्कर्स जो होते हैं वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड्स व्हेन इट कम टू द फिल्म इंडस्ट्री और थ्रू आउट द वर्ल्ड इनकी रिकॉग्नाइजेशन होती है. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. नीति आयोग
and the Food and Agriculture Organization. Niti Aayog, as you all know, that Niti Aayog and Food and Agriculture Organization launched a book titled Indian Agriculture Towards 2030. तो एक बुक को लॉन्च किया गया है नीति आयोग ने और FAO ने. सो व्हाट इज FAO? FAO इज फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन. बुक का टाइटल क्या है? इंडियन एग्रीकल्चर टुवर्ड्स 2030. राइट. सो हु इज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर? नरेंद्र सिंह तोमर हैज रिलीज्ड अ बुक. जो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, राइट, फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर, जो फार्मर्स वेलफेयर को देखते हैं. Okay, why this news becomes important? Because as you all know कि farmers की एक बहुत बड़ी around a year or more than that एक long agitation on the borders of Delhi हुआ, right? And depending upon that, जो farm laws हमारे जो आए थे उनको repeal भी करते गए by the government of India. So due to that, now these type of news becomes important from the exam point of view. So the minister Narendra Singh Tomar, who is the agriculture minister of our country, released a book with the title Indian Agriculture Towards 2030. राइट. 2030 में जो इंडियन एग्रीकल्चर होगा, पाथवेज फॉर एनहांसिंग फार्मर्स इनकम, फार्मर्स के इनकम को कैसे बढ़ा रहे होंगे, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबल फूड एंड फार्म सिस्टम्स. राइट. इट वाज लॉन्च्ड एट एन इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय नीति आयोग. सो दिस बुक हैज बीन लॉन्च्ड एट ए इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय नीति आयोग एंड द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द यूनाइटेड नेशन. सो नीति आयोग इज आवर लाइक local body for our country, and Food and Agriculture Organization is of the United Nations. So this is the international body, and this Niti Aayog is our own local body which looks after different plans and commissions. So National Institution for Transforming India is the full form of Niti Aayog. Now book captures the outcomes of the deliberative processes. जो भी नेशनल डायलॉग नीति आयोग के हुए हैं, क्या क्या इसके प्रोसेसेस होंगे, फार्मर वेलफेयर, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री के लिए क्या क्या काम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही होगी, दैट हैज बीन कवर्ड इन दिस बुक, right, which has been titled with Indian Agriculture Towards 2030. Right. Now where are the headquarters of FAO? Okay, what is FAO? आप सबको पता होना चाहिए, that is Food and Agriculture Organization. तो Food and Agriculture Organization के headquarters हमारे कहाँ है? That is in Italy, specific, to be very specific, that is Rome, Italy. And who is the Director General? Q Dongyo. Q Dongyo is the Director General DG of FAO. Right. I hope आपको ये clear हुआ होगा, ये न्यूज आपको क्लियर हो गई होगी. इससे इंपॉर्टेंट टेकअवेज क्या है आपको? यू हैव टू कीप इन माइंड इंडियन एग्रीकल्चर टुवर्ड्स 2030 इज द टाइटल ऑफ द बुक. हु हैव लॉन्च्ड दिस बुक? द एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री, दैट इज नरेंद्र सिंह तोमर, हैज अलोंग विद नीति आयोग एंड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन. इवेंट कहां ऑर्गेनाइज हुआ था? नीति आयोग एंड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन. हु इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ FAO? FAO इज फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज Q Dongyo. एंड वेयर आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ FAO? दैट इज इन रोम एंड इटली. सो ये इंपॉर्टेंट टेकअवेज हैं दिस न्यूज के. आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा. And so this is the important news of today. So I hope with this we have done with the important news of today. So take care, stay well, stay safe, keep revising and keep reading. These are the current affairs for last 3 days. These are some of the important current affairs. So पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सारी चीजों को रिवाइज करते रहिए, so that you can easily able to deal with your entrances. Thank you and have a nice day. Take care all of you. Thank you.